तो आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लीनिंग ऑफ द sequence, specific sequence that come from the gene sequencer and genetic analyzer technique। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम सीक्वेंस को कैसे क्लीन करेंगे और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैसे निकालेंगे और उसके बाद हम NCBI जो नेशनल डेटाबेस है उसमें कैसे सबमिट करेंगे और हम देख सकेंगे क्या हमारी जो स्पेसिफिक जो जीन है वो किसके साथ मैच कर रहा है। तो इसके लिए मैं जो काम कर रहा हूँ वो एक प्लांट स्पीशीज़ का सीक्वेंस है। ऐसे हमने स्पेसिफिक प्राइमर्स लगा के इसको सीक्वेंस करवाया है। उसके बाद ये हमारे पास रॉ डाटा। इस रॉ डाटा में आप देखेंगे कि 0 to about 20-25 बेस पेयर के जो इनिशियल पीक्स हैं वो मतलब इतनी अच्छी नहीं है। तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं पीक्स की लेंथ और क्वालिटी आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस किस्म की पीक्स हमने सिलेक्ट करनी है और किस किस्म की पीक्स हमने रिमूव करनी है। So let's start with the sequence and the photogram that we have. So you can see here about 830 yes 830 up till 830 base pair, it giving a good result about all the photograms. तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि 840 तक अच्छे सीक्वेंस हैं। सो इसके लिए ये मेरा फॉरवर्ड सीक्वेंस है। इसी में हमारा रिवर्स सीक्वेंस भी होगा। पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ, उसके बाद आप देखेंगे कि हाउ वी कैन क्लीन एंड आफ्टर दैट वी कैन मर्ज एंड एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टर W and application of the Bioedit for sequence alignment। So आप नीचे वाले बार पे आएंगे, यहाँ पे आके राइट क्लिक करके जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये एडिटर बार खुल जाएगा। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो सबसे पहले आप नीचे वाली साइड से जो सीक्वेंस है उसको कट करेंगे। और आपने देखा है फोटोग्राम से कि 830 से अबव जितने भी सीक्वेंस हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं तो उनकी पीक्स और उनकी पीक्स की क्वालिटी 0 है। अगर हम इसको बड़ा भी करें तो इट विल नॉट गिव एनी सच टाइप ऑफ पीक्स एंड क्वालिटी। सो यू कैन सी हेयर, सो फ्रॉम 830 to downward you can select and delete and making apply and close। 30 base pair is not giving the good result, so I just remove that one and apply and close। so आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा जो फॉरवर्ड सीक्वेंस है वो अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है। सो हम अब रिवर्स सीक्वेंस को ओपन करेंगे। ये मेरा सैम्पल 29 और ये फॉरवर्ड सीक्वेंस था। तो ये मेरा सैम्पल 29 और इसी का ये रिवर्स सीक्वेंस है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि
फिर हम उसी तरीके से हम इसका फ्रंट साइड से और बैक साइड से इसकी पीक्स चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हिस्सा हमने रखना है और कौन सा हिस्सा हमने रिमूव करना है. Sorry for delay because system is a little bit busy, but it will be open. So see here, this signal from 10 to 60 is not giving the good peaks. You can open a wider range, so we can consider up to we can't consider from 10 to 60, so go at the end also. So you can see here the peaks is little down, not giving the good. So up till 630 or 640 you can see that. Just remove it and go up. From the up we select 10 to 60, that is showing the double, apply and close. Now आपने देखा कि हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों सीक्वेंस रेडी हो चुके हैं. अब ऑडियंस आपको पता होगा कि एक फॉरवर्ड सीक्वेंस होता है और एक रिवर्स सीक्वेंस होता है. जो फॉरवर्ड सीक्वेंस होता है अगर हम उसका कम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो वो एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस बनेगा, तो लिहाजा हम रिवर्स को कम्प्लीमेंट बना देंगे ताकि हम उसको जब अलाइन करें तो हमें पता चले कि वाकई ही हमारा ये सेम सीक्वेंस है. तो इसका तरीका ये होता है कि आप सीक्वेंस में जाएंगे, सीक्वेंस में जाने के बाद आप मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन पे जाने के बाद यहाँ पे है रिवर्स कम्प्लीमेंट. जब आप रिवर्स कम्प्लीमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो सीक्वेंस है सारे का सारा रिवर्स हो जाएगा. जब ये रिवर्स होगा देन आप इसको दोबारा ओपन करेंगे. दोबारा ओपन करने के बाद यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे तो आपकी जो फॉरवर्ड वाली फाइल है आप उस पर आ जाएंगे. ये आपकी फॉरवर्ड वाली फाइल है. यहाँ पे आप सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे, न्यू सीक्वेंस पे जाएंगे और यहाँ पे आके आप अपना सीक्वेंस जो आपका कम्प्लीमेंट्री है वो आप यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे. जब आप पेस्ट करेंगे तो ये आपका रिवर्स सीक्वेंस का नेम या आईडी है. इसको आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे. ये पेस्ट हो गया. और जो सीक्वेंस टाइप है इसमें ये मेरे डीएनए का सीक्वेंस है, ये मैं यहाँ पे डीएनए करता हूँ. जब आप डीएनए करेंगे तो अप्लाई एंड क्लोज करेंगे. जब आप अप्लाई एंड क्लोज करेंगे तो आप देखें यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों सीक्वेंस यहाँ पे आ गए. जब दोनों सीक्वेंस यहाँ पे आ जाएंगे तो आप इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करने के बाद आप जाएंगे एसेसरी एप्लीकेशन में. यहाँ पे आपके पास है क्लस्टर डब्ल्यू मल्टीपल अलाइनमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, रन क्लस्टर डब्ल्यू अलाइनमेंट. तो आप जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर अलाइन आपके सीक्वेंस को अलाइन करेगा. Taking some time due to system is busy because I have some software that is working behind, so wait for some time.
तो व्यूअर्स आप देखें कि ये वाला जो सीक्वेंस है वो अलाइन हो चुका है, और आप देखेंगे कि फॉरवर्ड और रिवर्स सीक्वेंस आपको दुनिया भर में अलाइन हो चुके हैं। इसका मतलब यही है कि जो हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स सीक्वेंस है वो ठीक है, इसी वजह से वो खुद में अलाइन हो चुके हैं। अब इसमें बहुत सारी जगह पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाले सीक्वेंस वापस में अलाइन नहीं है, तो हम इसकी पीक्स चेक करेंगे। पीक्स चेक करने के बाद हम यहाँ पे एडिशन और डिलीशन करेंगे। तो इसका सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप इसको एडिट करें। यहाँ से ये एडिट हो जाएगा। एडिट होने के बाद आप यहाँ पे और देखें नंबर 1 पे यहाँ पे टी है और नीचे सी है। तो पहले हम ये ऊपर वाला जो सीक्वेंस है या फॉरवर्ड का है, तो हम ज़्यादा फॉरवर्ड वाले सीक्वेंस पे जाएंगे। ये हमारा फॉरवर्ड वाला सीक्वेंस है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक के सीक्वेंस को कॉपी करें, कंट्रोल F करें और कंट्रोल V करें। सेम जो सीक्वेंस है आपको फॉरवर्ड सीक्वेंस में मिलेगा। और आप यहाँ पे ये देखें, ये टी आपको नज़र आ रहा होगा, और टी की पीक चेक करें कि यहाँ पे कैसी है। ऑलमोस्ट ठीक है, बट इसकी मोर श्योरिटी रिवर्स सीक्वेंस से होगी। वहाँ पे जाके हम रिवर्स सीक्वेंस की देखेंगे, और रिवर्स सीक्वेंस के लिए एग्जैक्टली सेम ही सीक्वेंस होगा ये रिवर्स का। तो रिवर्स सीक्वेंस के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसकी ये पेज हम इसको रिवर्स करें। यहाँ पे जाके हम रिवर्स कम्प्लीमेंट करें। ये रिवर्स कम्प्लीमेंट हो गया, ये एग्जैक्टली फॉरवर्ड जैसा ही पेज बन जाएंगे। तो कंट्रोल F, कंट्रोल V, नेक्स्ट। तो ये आप देखिए यहाँ पे C है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि C वाली जो पीक है वो इतनी अच्छी नहीं है, जबकि A वाली जो पीक है वो बहुत अच्छी है। तो लिहाजा हम सिलेक्ट करेंगे कि नीचे वाला जो सीक्वेंस है वो ठीक है। तो हम इस वाले पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें हम डी करेंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम अपने सीक्वेंस को कॉपी करेंगे, फार्फल पे जाएंगे, कंट्रोल F, कंट्रोल V, फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पे जो देखें आपकी टी वाली जो पीक है वो बहुत ही अच्छी है, तो लिहाजा इसको हम यहाँ पे भी ठीक है। ऐसे ही हम 3rd नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे देखें सही वाली पीक बहुत अच्छी है, लिहाजा हम यहाँ पे भी सही करेंगे। और हम देखेंगे कि इससे अगला जो सी है बहुत अच्छा है, इसको भी हम सी पे क्लिक करेंगे, दोबारा रन करेंगे।
इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते जाएंगे अंडर के हमारे सारे के सारे सीक्वेंस वो कंफर्म हो गए और हमारा सीक्वेंस एग्जैक्टली हो गया। यहाँ पे देखेंगे सी और सी की भी बहुत अच्छी है और के यहाँ पे भी सी आएगा तो बॉल एंड कर दें। फिर हम नेक्स्ट सीक्वेंस पे जाएंगे। नेक्स्ट सीक्वेंस हमारा ये है यहाँ पे टी तो टी की बहुत अच्छी है। In that case, we will go on the reverse sequence. आप देखें यहाँ पे सीक्वेंस बहुत ही लो आएगा तो हमारे लिए ईजी है कि इसको हटाने का।
मोस्टली जो फॉरवर्ड वाला सीक्वेंस है वो ज़्यादा अच्छा आ रहा है रिवर्स वाले की। तो हम कोशिश करेंगे कि फॉरवर्ड वाला जो सीक्वेंस है उसी को फाइनल करेंगे। उसकी पीक्स भी अच्छी हैं, रिवर्स वाले की पीक्स इतनी अच्छी नहीं है, तो होगा comparatively. Otherwise, you have to choose. You have to check both forward and complementary of the reverse sequence. So it makes sense that either you select the sequence from the forward side or from the reverse. देख रहे हैं कि सारा सीक्वेंस अलाइन हो रहा है। मोस्टली ऐसे सीक्वेंस आते नहीं हैं, तो इसमें जो सीक्वेंस है वो कुछ पॉइंट्स पे डाइवर्सिटी दे रहा है, फॉरवर्ड और रिवर्स में। सारी चीज़ें आपको क्लियर है और मैं इस वजह से फॉरवर्ड सीक्वेंस को अडॉप्ट कर रहा हूँ, तो फिर उसकी पीक्स और क्वालिटी रिवर्स के नस्बत बहुत अच्छी है।
was finished. So in that case you select the upper part to match it. आप देख रहे हैं देखिए तो व्यूवर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लेके और यहाँ तक आप अपना सीक्वेंस फॉरवर्ड वाला कॉपी करें और नीचे इसको पेस्ट कर दें। जब वो आप नीचे पेस्ट करेंगे तो आपका पूरे का पूरा सीक्वेंस जो अलाइन हो जाएगा। देन आप देखें कि कौन सा सीक्वेंस बड़ा है ताकि वो हमारा मैक्सिमम एरिया कवर करे। सो आप देख रहे हैं कि जो फॉरवर्ड का सीक्वेंस है वो कंपैरेटिवली रिवर्स की निस्बत बड़ा है। सो वी कैन सेलेक्ट this one, right click, open. So after that we can copy this link and you can save your file into your respective folder. So I can save this type of sequence into the FASTA file. So this is my sample number 29 forward and reverse. I'm going to copy it here, save the file. So this is your very clean sequence from your data. So now you can go to NCBI. So this is the NCBI main file. So then we can discuss it later on. So this is the NCBI main file, so you can go in the blast session. So this is my nucleotide blast. So you can put your sequence here. After that, these are the parameters that belong to the nucleotide collection, exclude, limit to the enter query exclude. So after that you can make, this is a highly similar sequence from the database. You can make the blast. So it will take some time to calculate and to search and match your sequence. So it's finished. Searching, status searching, this page will automatically update it. So you can wait for some time. So it's finished. So you can see here my sequence is matched with the lamina chloroplast gene. It's a 98.76% match, the original one. So this is exactly the same gene that I want to find it. So by this way you can get your data from the sequence, and how to clean it, you know that. So if you have any question, so please comment in the comment box. I will try to answer all of these questions for your easiness and for your research. Thank you very much. Keep loving, stay with us, and subscribe our YouTube channel for to see our upcoming new videos. Thank you very much.
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम ऑलरेडी जो सबमिटेड एक्सेशन नंबर्स हैं उस डाटा को हम कैसे एनालाइज करेंगे, उसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, उसके बाद हम उसकी प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करेंगे और फिर उसको हम फर्दर फॉर पब्लिकेशंस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। So we call it Geo2r. Basically it is a tool from where we can extract the data, and after that visualization, normalization will be determined between the two different types of groups. So in brief I will elaborate you what is Geo2r. It is an interactive web tool that allows users to compare two or more groups of samples in a GEO series in order to identify genes that are differentially expressed across experimental conditions. So results are presented in the form of tables, gene tables, ordered by significance, and a collection of graphic plots to help visualize differentially expressed genes and assess data set quality. So for that reason, if we move a little bit deeper more, so we can say that GEO performs comparison on original submitted supplied process data tables using the GEO query and lemma or package from the Bioconductor project. What is Bioconductor? Bioconductor is an open source software project based on R programming language and that provides tools for the analysis of high throughput genomic data. So the query by the R package pairs GEO data into R data structures that can be used by other R packages. The lemma linear model for microarray analysis package has emerged as one of the most widely used statistical tests for identifying differentially expressed genes. It handles a wide range of experimental design and data types and applies multiple testing corrections on p-value to help correct for the occurrence of false positives. So we can say that the GEO provide a simple interface about the R statistical analysis without command line expertise. So viewers, it's a very easy way by using this package to determine the top 250 expressed genes in a data set, I mean the microarray data that is already present from the NCBI, and after that we determine the different ways in the form of tables, in the form of graphical representation of the data, and we will discuss in the next sessions. So unlike GEO, other dataset analysis tool Geo2r does not rely on curated datasets and interrogates the original series matrix data file directly. This allows a greater proportion of GEO data to be analyzed in a timely manner. However, it is important to realize that this tool can access and analyze almost any GEO series regardless of data type and quality, so that the user must be aware of the limitation and caveats about the Geo2r package. So now the most important session
how to use this dataset or the tool to determine different types of quality of the data and make the presentations of the data in the form of table and graphical representation, and at the end finally you can see that you can determine the things. So the first one, we need a specific series of accession numbers that can be analyzed. First I will describe you everything in detail, and after that directly we can go on the site so we can analyze one data, and I will explain you how to put the session number, and after that we can define the sample groups. After defining the group, so we assign the samples to each group, and after that we can analyze the key. So from the simple sample metadata columns to help determine which samples belongs to which group. So the table is populated with accession, title, source name, and individual characteristics of the data, and after that the different types of column box at the upper right corner of the table, and the columns can be sorted by clicking the table header. So when we perform the analysis has been assigned to groups, and analyze the button to run the analysis with default parameters. Alternatively, you can edit the default after sample assigning the groups. Toool can click on the analyze button to run the analysis with default parameters. So conversely, you can edit the default analysis parameter in the options tab. So from the options tab you can change your parameters like the probability value and the other things, the p-value adjustment method in the options, and after that you can reanalyze the analysis with revised parameters. So when you analyze the data, so you have got different types of data sets in the form of UMAP, box plot, expression density, and mean variance trend plots. So these plots can be helpful in assessing normalization status and sample groupings. That is, you can say that it will help to determine the suitability of the study for further analysis and whether to apply any adjustments to the sets. So the first of all, when you get the results, so different top differentially expressed genes will be available. So it should be in the form of this. So here you can see when you click on one gene, so it will give you the ID, the adjusted p-value, the p-value, t-value, log fc value, gene symbols, and gene title. So in our case we have the control treatments and with the space flown the other treatment, and you can see here the expression value of each gene relative to control. So from here we can determine the upregulated or downregulated of the gene expression into a specific type of data set. So this is the first example for expression of the gene that we can get after the analysis. So results are presented in a browser as a table of top 250 genes ranked by p-value. Genes with smallest p-value are the most significant. Click on the row to reveal the gene expression profile graph for that gene. Each red bar in the graph represents the expression measurement extracted from the value column of the original submitted supplied samples. So after that, the sample accession numbers and group numbers are listed around the bottom of the chart. So by this way, in the next you can select the columns to determine the features of the data, and annotation column are included in the table. So you can get the summary statistics that you need.
So a second type of graph that you can be find during the data sets is the visualization or volcano plot. So volcano plot displays statistical significance in the form of log 10 p-value versus magnitude of the change and is useful for visualization differentially expressed genes. So by this we highlighted gene are significantly expressed at the default adjusted p-value and cutoff. So relative to the second sample in the group in your analysis, a separate plot is generated for each contrast. So side by side from the top 20 to 50 genes, you also have download the table full file for your specific data sets that you are analyzed. So in the number third, you can also find the mean difference plot of the selected data set. And a mean difference plot display log 4 gene versus average log 2 expression value and is useful for visualizing differentially expressed genes. So if more than two sample group are defined, use the checkbox to toggle between the contrast and use the download significant genes button to download the highlighted gene in each contrast. The third type of graph that you can find over there is called UMAP. UMAP called Uniform Manifold Approximation and Projection. Gives the dimension reduction technique useful for visualization how samples are related to each other. The number of nearest neighbors is used in the calculation is indicated in the plot. So this plot can be generated without sample group selection. This is the most important diagram and the Venn diagram. So Venn diagram basically gives the information about the gene in each region. The healthy control versus osteoarthritis and healthy control versus the other treatment that you are using to download the 976 significant genes that are commonly to both contrast. So in that case you have one limitation that data for up to 5 contrasts can be plotted. When less than 5 groups have been defined, default behavior is to show contrast with the highest and lowest number of expressed genes. Alternatively, you can select with which 5 contrasts to display on the option tab. So this is the box plot. So box plot basically it gives the information of the distribution of the values of the selected samples and it gives the different colors of the distribution and samples are suitable for differentially expression analysis. So if that is not the case, you might consider checking force normalization in the option tab, which will apply quantile normalization to the expression data, making all selected samples identical value distribution. So this type of plot can be generated without sample group selection, so we can analyze before defining the groups. So the next graph represents about the expression density. So in the expression density, we can view the distribution of the values of the selected samples. The samples are colored according to groups and the same procedures that we can done for the box plot. So we can change it, edit it from the force normalization option and just click the analyze before defining groups. So this is the adjusted p-value histogram. So it will give the view distribution of the p-value in the analysis, and the p-value here is the same as in the top differentially expressed genes table and computed using all selected contrasts. The displayed table is limited by the size. This plot allows you to see the big picture by showing the p-value distribution for all the analyzed genes. So this is the total mean variance trend of all the
genes that you are selected and you are analyzed. So it's giving the mean variance relationship of the expression data after fitting a linear model. It can help if there is a lot of variation in the data. The plot can help assess whether applying the precision weight option to take mean variance trend into the account is recommended. So more information and references you can find from these table or graph. So basically the GEOR, if we talk about the summary of the statistics, so GEO2r provides the following summary statistics as generated by lemma top table function. So the first one is giving the adjusted p-value, the p-value, the t moderated t statistics. B statistics are log odds, that is gene of differentially expressed, log FC, log fold change between the two experimental conditions. Control or stressed, or control versus cancer. This type of data set will help you to find the biomarkers finally. So F moderator F study combine the T statistics for all the pairwise comparison into an overall test of significance for that genes. So viewers, after that I will explain you how to use the software online to get the microarray data into a differentially expressed genes and to determine the value, variance and the data variability, the quality, to making the visualization and to find out the box plot. These are types of data analysis we will use in the next session. Thank you very much. Thank you very much. If you have any comments or questions, just put into the comment box, so I will answer over there. So keep loving, stay with us, subscribe our channels to get the notification of the new video. Thank you very much. EO टूल को कैसे यूज़ करेंगे? ये आपके सामने NCBI का एक प्रोग्राम है जिसमें जीन एक्सप्रेशन ओमनिबस का लोगो शो हो रहा है। यहाँ पे हम अपना जो एक्सेशन नंबर है, जो ऑलरेडी डाटा है, उसको हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम सेट पे क्लिक करेंगे। जब हम सेट पे क्लिक करेंगे तो इस में जितने भी जीन्स, बेसिकली ये कैंसर सेल का डाटा है, मैक्रो एरे डाटा है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कैरोटिनोसाइट और क्यूटेनियस SCC दो किस्म के ग्रुप हैं इसमें। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि हम पहले नंबर पे एक्सेशन नंबर डिफ़ाइन करेंगे। आफ्टर एक्सेशन नंबर वी विल फर्दर मूव टू द डिफ़ाइन ग्रुप। जब हम डिफ़ाइन ग्रुप में जाएंगे तो ये मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, और तो आप यहाँ पे अपने ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पहले को कैरोटिनोसाइट का नाम दिया और दूसरे को क्यूटेनियस का नाम दिया है। जब आप इस ग्रुप को बना लेंगे तो आप सिंपली कर्सर को ड्रैग करेंगे और कैरोटिनोसाइट में आप जितने भी आपके सैंपल हैं वो ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो दूसरे सैंपल हैं क्यूटेनियस SCC जो कि कैंसर के सेल हैं तो वो ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तो आप इस कर्सर के थ्रू नीचे आएंगे तो आपके पास GEO2r ऑप्शंस, प्रोफाइल ग्राफ और R स्क्रिप्ट के 4 सब फोल्डर शो हो रहे होंगे। बेसिकली ये एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है जो कि इसकी सेटिंग ऑलरेडी की गई है। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू एडिट द सेटिंग, change the setting and reanalyze your data. So from the analyze button you can analyze your data set. So it will take some time after processing.
stay with me. So you can see when the processing is done. So it's finished right now. So here you can see the visualization, and you can click here. So you can see here explore and download your two group data. The first one is keratinocytes versus cutaneous SC. So यहाँ पे आप एक्सप्लोर करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. बेसिकली ये हमारा वोल्केनो प्लॉट है, ग्राफ है. सेकंड नंबर पे ये आपका मीन डिफरेंस प्लॉट है. So it will give all the data of the up and down regulated genes that is expressed in two groups, keratinocytes and cutaneous. So it's log two-fold change. You can see. Also you can download it by the right click. So this is the third graph, UMAP. I discussed already, and here you can also see the two expressions of the two groups, green and blue. Basically is a keratinocyte and cutaneous groups that we are making. And after that, this is the ILMA, because we only have two groups, so it giving you the total number of genes that can be overlapped in two groups. So if we have the three groups, it will give you the two circles and overlapping condition. If you have the four groups, so it will give you the three structure, round structure and overlapping genes. It will be available. So further you can move. So it will give you the box plot of the expression genes that we are defining the group. So this is the expression density of the two groups. So this is the p adjusted value content. From here you can see the p value of each gene and group that we are determined. So in the next video you can see, and this is the moderate t statistics. It's also determine the variance and the mean value of the two groups that we are combined. So here is the mean variance trend of all the genes and average log expression of the two groups that we defined earlier. So after you can download this data in a separate file and can use for further analysis. So here you have the options to edit the gene and what kind of data you want to edit it. So these are the Benjamini and false discovery rate. So this Hochberg, Homer, none. So apply log transformation to data. So it is auto detected. So if you want yes or no, you can be changed. Apply limit precision weight, no. So you can put yes. When you put yes, force normalization, yes or no, you can go for yes. And the category of the prevalent should display on the results. So this is the p-value. Volcano and MA plot contrast. So you can here see. So after that you can reanalyze the data. So here you can see the results after editing the setting. So it's not giving it's changed. You can see here the average
the standard deviation, the SQRT, and after that the profile graph. It will not give here any plot graph, but I think it's working on there. So if you want to use the R language formulas, so you can directly get it from here, and yet you can put into the R program and you will get this data sets over there also. But it is the easiest way when anybody not know about the R program and the commands. So here you can see the top differentially expressed genes. So here is download table file. You just click it. When you click it, so your table file for all 250 genes will be downloaded, including the p-value, long term, and everything that you want, and also the pathways, the gene title here, what kind of gene it is, and what is its function. So you can see here, you can click anyone, so it will give you the detail about the two groups, because we have two types of group, keratinocytes and cutaneous. So it will give the expression value relative to control. This is the control and this is the cancer cells, and down regulated and up regulated of the genes you can see here. So by this way you can analyze the data, and at the end you can determine the biomarker as well for future determination of your data set. So viewer, if you need any help, any question regarding the GEO programming of NCBI, so you can comment me in the comment box. So I will try to give the answer for you. Stay with us and keep loving and subscribe our channel for the upcoming new videos. Thank you very much.